of the Lok Sabha that the Rajya Sabha to agree to nominate 7 members from Rajya Sabha to associate with the Committee on the Public Undertaking for the term beginning on the 1st May 2025 and the ending on the 30th April 2026 and to proceed to elect in such manner as directed by the chairman 7 members from among us the members of the House to serve on the said committee. Motion moved. Those in favor will say aye. Those against will say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Motion adopted. Dr. L. Murugan to move a motion for nomination of 10 members to the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to move that this House resolves that the Rajya Sabha to join the committee of both the houses of the welfare of scheduled castes and scheduled tribes for the term beginning on the 1st May 2025 and the ending on the 30th April 2026 and to proceed to elect in accordance with the system of proportional representation by means of this single transferable vote, 10 members from among us, the members of the House, to serve on the said committee, sir. Motion moved. Those in favor will say aye. Those against will say no. I think ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. Honorable members, a message from the Honorable President. Take your seats. I am reading a message from the Honorable President of India. Both in the Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is the JPC report that's going to be tabled in the Parliament, which means basically to be adopted as the report with its recommendations as the draft legislation. This is important, remember, because the opposition is consistently opposing it. That's one of the reasons that you already can see a stormy session in the Parliament. This is the Rajya Sabha, of course. We'll go across to the Lok Sabha as well in just a short while. The Waqf Amendment Bill, looking at sweeping powers on this. Who is President of India? Take your seats. Let me read out a message, please. Aishwarya Paliwal is joining me for the latest on that. Aishwarya, what exactly happened? Looks like within minutes there was a stormy session. There was, we could hear commotion in the background. Tell us more. Well, Vijay, let me tell you, the opposition MPs raised a hue and cry at the moment, and this, 11 o'clock was the time when the Rajya Sabha began. At 11:03 is the time when Nida Kulkarni got up and she said in Hindi and English, I would like to table the JPC Waqf report. And then we saw all the hangama taking place. The opposition leaders have now come out. They are now saying that the way in which the table was, the JPC was being held, and then later they said the way in which it is being tabled is something that the opposition does not believe in. And now the TMC members, let me tell you, MPs have come out and said that the report which has now come out, the Waqf bill, the report on the Waqf bill has been rated. The opposition MPs believe that this is not the correct way of doing it, and consultation process was not done the way in which they were expecting it to be done. Aishwarya, can you take us through some of the details, possibly the recommendations you have? It's a over 200-page report. In fact, I would correct myself, 428-page report of the JBC. Already looks like that the House has been adjourned. Aishwarya, can you confirm to us, Rajya Sabha has been adjourned over the uproar, but where does the status stand? Because the report has been tabled. Tell us, how was the vote like? What made the opposition so agitated? Well, the opposition leaders, let me tell you, have now come out and they are saying that the way in which the report was made, the way in which the JPC was being held, and that the opposition leaders were not heard. What the opposition leaders wanted to say, what they wanted to be in the report, the dissent notes, most of the things that they wanted to be in the report, those things were not in the report, but without consultation, without extensive consultation. This is what the opposition leaders are saying. They are saying that this report has been tabled, and the ruckus was so much. Imagine in Rajya Sabha that the Rajya Sabha has now been adjourned, and we will see, the Lok Sabha MPs also in some time coming out and speaking about the report, because it's not just in the upper house, but we'll also see in the lower house also the report being tabled. We could expect on the last day of the Parliament a lot of hangama with regards to this report.
can we say that both Lok Sabha also and Rajya Sabha have been adjourned? Has that happened? Can you confirm to us? And has the report been accepted? Because with the kind of commotion that we could hear, clearly the opposition just not happy with the JPC amendment report. Remember, 428 pages of this JPC report that has recommendations, a draft legislation. Opposition has already filed a dissent over this. The JPC report has said that it needs to question some of the sweeping powers that the Waqf Board has been accused of in the past few years specifically. However, Jagdambika Pal has said final report has been prepared. Testimony has been considered from relevant stakeholders. We have seen in the past few days Muslim clerics from across India have been interacted with. Their views have also been taken. And throughout the proceedings, according to Jagdambika Pal, a broad range of witnesses, representatives from the board, minority commission, government officials, Islamic scholars were all consulted. However, there has been charge against the opposition that they're misleading the JPC, that this would result in the seizure of the Waqf properties and that it's an appeasement strategy, is what the chairperson of the JPC, Jagdambika Pal, had said. However, remember, for example, AIMIM's Asaduddin Owaisi, other leaders also from the Muslim community have been interacted with. They have given their views as well. But the opposition continues to oppose the bill. They have said that this is going to basically mean to take away the properties that Waqf Board currently has hold of. Remember, we had seen controversies in the past few months itself, where especially in the southern states, from आवश्यक बना है, किसी के ऊपर बिल्कुल भी अन्याय नहीं है, कोई किसी के प्रॉपर्टी नहीं लेने जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट बना है। और कायदा सबके लिए समान होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गरीब मुस्लिम भी उनसे वंचित नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए ये कानून बनने जा रहा है। तो इसका हमें जो विटनेस मिलने के लिए आए थे, उन्होंने जो हमारे पास चर्चा मतलब आके चर्चा की, समिति में चर्चा की, तो उसका जो भी कुछ निचोड़ निकला है वो रिपोर्ट में हमने दे दिया है। तो बिल्कुल देखेंगे। कुछ सांसद ऐसे हैं जो जेपीसी के मेंबर्स हैं, उनका ये कहना है, जो मुस्लिम सांसद हैं तो अपोजिशन के, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं वो कुछ ले जा रहे हैं। उन्होंने खुद ने सुना है। हमारे जो मुस्लिम भाई आज यहाँ बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जेपीसी के सदस्य थे, वो आज कुछ भी यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो देश के मुस्लिम हमारे भाइयों को भड़काना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने खुद ने सुना है कि बहुत सारे ऐसे हमारे डिप्राइव्ड भाई भी आए थे वहां, और उन्होंने कहा कि आज तक हमें वक्फ के लैंड का कोई भी फायदा नहीं हुआ, किसी ने ना हमें कोई शिक्षा के लिए मदद की, ना हॉस्पिटल के लिए मदद की, कुछ नहीं किया। तो हमारे लिए भी होना चाहिए। अगर किसी ने अगर दान दिया है अल्लाह के नाम पर, तो उसका फायदा सबको होना चाहिए, हम क्यों उससे वंचित रहे। तो इसके लिए ये कानून बना है कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। अगर किसी की कंप्लेंट है कि मुझे मेरी जमीन ये क्लेम करे कि मैंने इनको दान दी है, लेकिन दान दी ही नहीं है हमने, तो उसके लिए भी कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए कि उनको वो कहाँ जाए। तो ये होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। Right, a background to the viewer watching. The Waqf Act of 1995 was introduced to regulate the Waqf properties, but there's been criticism of mismanagement, corruption, encroachments within the board. So it was last year in August when the government introduced the two bills, the Waqf Amendment Bill 2024 and the Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. And the primary objective of it was to ensure better management of Waqf properties that are massive in millions worth of rupees, and therefore to ensure that there are no sweeping powers that are misused. So this Waqf Amendment Bill 2024, that's what we are talking about right now, was tabled in the Parliament. Remember, last year it was referred to the JPC, and that is to incorporate technology, give a new definition, streamline the registration process. Let's listen in to more reactions coming in. बात करते हैं इमरान मसूद साहब है, उनसे पूछते हैं कि क्या इस रिपोर्ट को पेश होने दिया जाएगा, क्योंकि आज जगदम्बिका पाल जेपीसी की रिपोर्ट वक्त पे जो है उसको पेश करने जा रहे हैं, टेबल करने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे इतनी मीटिंगें हुई, आप लोग की बातचीत हुई, तो आप लोग भी सहमत होंगे रिपोर्ट से? नहीं, देखिए रिपोर्ट तो पूरी तरीके से ये हमारे हितों के ऊपर कुठाराघात है। ये इतिहास के अंदर काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि देश के अंदर कितना क्रूर व्यवहार
संख्या बल के आधार के ऊपर मुसलमानों के साथ मुसलमान के पर्सनल लॉस को क्रश करने के लिए, मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को हड़पने के लिए मुसलमानों के साथ कितना क्रूरतम व्यवहार संख्या बल के आधार पर किया जा रहा है। देश के अंदर देश का नौजवान परेशान है, वो सवाल ना करे कि हमारा रोजगार का क्या हुआ। देश के अंदर आप सारी प्रॉपर्टी बांटे जा रहे हो, कहीं बॉर्डर की प्रॉपर्टी भी आप अडानी अंबानी को अडानी को दिए जा रहे हैं। आप रसोई चलाना लोगों का मुश्किल हो गया। जेपीसी की बात कीजिए फिर। सुनिए, जेपीसी की बात कर रहा हूँ हाँ। कि आपको रसोई चलाना मुश्किल हो गया, इस पे सवाल कोई ना खड़ा हो जाए। इसलिए मुसलमान को टारगेट करो, मुसलमान के ऊपर पूरी तरीके से हमला करो, और जितना मुसलमान पर हमलावर होगे ये सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे। इस देश के अंदर इनकी राजनीतिक दुकान चलती रहेगी, केवल इसी के ऊपर बात हो रही है। कुंभ के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, उस पर चर्चा नहीं करेगा कोई भी, लेकिन जेपीसी पर चर्चा करेंगे। अच्छा देखिए, जेपीसी तो गठित, आप लोग ने भी मांग की थी कि इसमें पूरा विश्लेषण होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, रायशुमारी होनी चाहिए, तो जेपीसी गठित 11 साल जेपीसी चली थी पिछली बार। हाँ। जब बना था कानून जा करके, जिसको आप बुलडोज करने के लिए 3 महीने में आपने चेयरमैन बैठा दिया, टेलीफोन किया, ये करिए। चेयरमैन साहब का टेलीफोन के ऊपर काम कर रहे थे, तो क्या है जेपीसी के अंदर, क्या मायने तो है? चेयरमैन बहुत जल्दबाजी में जो पूरी जल्दबाजी में नहीं है, उनको एजेंडा चलाना है, देश के अंदर एजेंडा चलाना है, और उस एजेंडे के तहत ये काम हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग विरोध करेंगे? 100% विरोध करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे विपक्ष का कहना है कि तमाम जो डिसेंट नोट है वो भी शामिल नहीं किए गए हैं जेपीसी की रिपोर्ट में। इसके इतर जिस तरह से पूरी इस जेपीसी में जो अपने धर्म का पालन करना या अपने विश्वास पर चलने को लेकर इस्लाम में कौन इस्लामिक है नहीं है, इस पर भी सवालिया निशान लगा दिया गया है। वहीं एक तरफ जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं उनमें भी तब्दीली की गई है जेपीसी में, और जिसको लेकर लगातार विपक्ष ने अपना डिसेंट नोट दिया था, जो कि जेपीसी के रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया, और इसके चलते विपक्ष जो है हमलावर है। मौसमी सिंह, दिल्ली।